The first determinants of demand is price of the commodity. मतलब the law of demand state that other things remaining constant, the demand of the commodity is inversely related its price. It implies that a raise in price of a commodity brings about a fall in its purchase and vice versa. This happens because of income and substitution effect. So first determinants of demand कहाँ पर depend करছে ना ଗୋଟେ product ର price ଉପରେ. Then income of the consumer, जे कि consumer हमारा तंग income ऊपर केमते होची. The income of the consumer is another important variable which influence demand, and the ability to buy commodity depends upon up to the income of the consumer. When the income of the consumer increase, they buy more, and when the income of the consumer falls, they buy less. Obviously जदि हमर अधिक इनकम है आमे बहुत सारा जिंस किछि परचेस करू, एंड जदि हमर इनकम कम रहउची आमे कोन करू सब बेले चाहू कि केमते कम परचेस करके adjust करिया पाएंगे. तो से के लिए rich consumer demand more and more goods because it's his purchasing power is high. जे कि rich हमर consumer rich जे रहबे त obviously तांको डिमांड ता कोन रहबो ना अधिक रहबो, कारण तांको पाखरे पैसा अवेलेबल अछि अधिक, तो सेति पय कि तांको डिमांड अधिक रहबो. तो डिमांड को इन्फ्लुएंस करछि के ना फर्स्ट देखले हमें प्राइस इन्फ्लुएंस करछि गोटे प्रोडक्ट रो, देन हमें देखले कि हम कंज्यूमर जे रहउछि तार इनकम भी अफेक्ट करछि. देन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, समस्त को गोटे टाइप रो प्रोडक्ट पसंद हुए, समस्त वेराइटी टाइप रो पसंद, तो सेटा भी गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर. द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. इफ द कंज्यूमर develop taste for a commodity, they buy whatever may be the price. A favorable change in consumer preferences will cause the demand to increase. Likewise, an unfavorable changes in consumer preferences will causes the demand to decrease. जदि कस्टमर हमारा जहाँ भी चाहूचे या फिर कंज्यूमर हमारा जहाँ भी चाहूचे हमें जदि सही टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूचे, देन देखिबा कि तार डिमांड से प्रोडक्ट हमारा डिमांड अधिक रहउची. बट जदि अनफेवरेबल रहउची कि से टाइप ऑफ प्रोडक्ट को कंज्यूमर परचेस करूनी, मतलब से टाइप ऑफ प्रोडक्ट रो डिमांड नाही मार्केट रे, तो कोन हबो ऑब्वियसली डिमांड ता डिक्रीज करिवो, लॉस रे चलिवो हम बिजनेस. देन price related goods, the related goods are generally substitute and complementary goods. The demand for a product is also influenced by the price of the substitute and complements. When a one can be satisfied by alternative similar goods, they called it substitute, such as जेमते हमें कहि परिबा कि कॉफी और टी रो सब्स्टिट्यूट कॉफी या फिर कॉफी रो सब्स्टिट्यूट टी. जदि के कॉफी मतलब परचेस करि पारनी या फिर पी पारुनी, तो जन टी रे सैटिस्फाई करछि से. When commodities are complement, a fall in the price of one, other things being equal, will cause the demand of the other to rise, such as car and petrol. Thus the price of one goods and the demand for another as inversely related. मतलब देखो जदि हमें कार रो परचेज अधिक बढ़िला, देखियो प्रायतः कौन पेट्रोल ले चलछि, तो पेट्रोल रेट भी से अनुसार चलियो कि पेट्रोल रो अधिक डिमांड रहबे, फिर पेट्रोल प्राइस ता बढ़िबो कोन ने. देन आसला एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रोपेगेंडा. In modern times, the preferences of consumers can be altered by advertisement and sales propaganda. Advertisement helps in increasing demand by informing the potential consumer about the availability of the product, by showing the superiority of the product, and by influencing consumer choice against the rival product. The demand for the product decrease, मतलब mainly जेमते हमें कहि परिबा कि कॉस्मेटिक्स जो हमर रहउची, तो कॉस्मेटिक्स आइटम वगैरह रो कोन एडवर्टाइजमेंट तो जरूरी होची ना, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हमर आछी, तो सेटा भी गोटे फैक्टर जोटा कि डिमांड को अफेक्ट करे. देन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन,
consumer expectation about the future change in price and income may also affect his demand. If a consumer expects a rise in prices, he may buy a large quantity of that particular commodity. Similarly, if we expect its price fall in future, he will tend to buy less at present. Similarly, expectation of rising income may include him to increase his current consumption. मतलब देखो जदि किछि ଆମର ଯେମିତି ଧର କହୁଛନ୍ତି କି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବାର ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଧିକ ରେଟ୍ मतलब କିଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି କି କଣ ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ମିଳିବନି ତ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ସେଲ୍ କରିବେ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧିକ ପରଚେଜ କରିକି ନେଇ ଆସନ୍ତି ତ ସେ କହିଲା କି କନଜ୍ୟୁମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି ଯାଉଛି ତ ସେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପରଚେଜ କରିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କମ ରେଟ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବନି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ନା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଠାରୁ କମ ହିଁ ଆଣିବେ कि ना फ्यूचर भी तो प्राइस सेम ही रहइबो या फिर बढ़िबनी या फिर कमिबो तो काई बेकार हम अधिक नबो तो सेटा भी गोटे डिटरमिनेंट्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करूची देन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन the growth of population is also another important factor that affects the market demand. With increase in population, people naturally demand for more goods for their survival. Obviously এটা ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଯଦି population high ରହୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ product ର demand high ହିଁ ରହିବ ହଁ ନା ନାହିଁ then ଆସିଲା weather conditions weather ବି ଗୋଟେ important factor ହେଲା କି seasonal factor also affect the demand for certain items मतलब purely depends upon climatic and weather condition. For example ଆମର ଏବେ କଣ summer season मतलब स्टार्ट ହେଇ ଗଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏବେ କାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିବ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହଁ ନା ନାଇଁ ୱାଟରମେଲନ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିବ ତ ଯଦି ଆମେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହଉ କି ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହଉ ତ ସେ ସବୁର ରେଟ୍ କିଛିରେ ଥିଲା କି मतलब प्राइस एते अधिक थिला फिर डिमांड एते अधिक थिला कि से सब जिंस रे एबे कोन ना ऑब्वियसली समर सीजन स्टार्ट हला लोक मानकर डिमांड आगो ही आसबो देन आसला टैक्स रेट the tax rate also affect the demand high tax rate would generally mean a low demand for the goods at certain times the government restrict the consumption of a commodity and uses the tax as a weapon like a highly taxed commodity will have a lower demand जदि देखुछ कि तुमको गोटे प्रोडक्ट रे अधिक टैक्स देबा पड़छ तुम से प्रोडक्ट को काहे किनियो करियो तो सेटा टैक्स रेट भी गोटे अछि जोटा कि अफेक्ट करूची देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट the purchasing power is also influenced by the availability of credit if there is availability of cheap credit the consumers try to spend more on consumer durable thereby the demand for certain products increase मतलब जदि देखुछ कि जेमती हम नॉर्मली गां मनकर जेमती क्रेडिट रे मतलब परचेज करछन हम दुकान रो आनुछंती तो जदि सेही जिंसटा अवेलेबल रहउछ त देखिबो कि अधिक रो अधिक समान परचेज करबा सेटा भी डिमांड भी इंक्रीज हबो यदि क्रेडिट नाही मतलब क्रेडिट रे तुम किनि परिबो नाही देन जो लोक पाखरे धर आज मोमेंट रे पैसा नहीं बट से क्रेडिट रे किनिबा चाहछि काली से पेमेंट दबो तो से किनिबो कि जदि क्रेडिट अवेलेबिलिटी नाही क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल नाही तो से परचेज नहीं करबनी तो से एंतरे डिमांड डिक्रीज करबो जदि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट रे परचेज करबा पई कि अवेलेबल अछि ऑप्शन अवेलेबल अछि देन से ऑब्वियसली परचेज करियो देन also patterns of saving demand also influenced by the patterns of saving if people begin to save more that demand will decrease if it means disposal income will be less purchase of goods and services and on the contrary if saving is less their demand will increase then also circulation of money an expansion or contraction in quantity of money will affect the demand. When more money circulate among the people, more of
a thing is demanded by the people because they have more purchasing power and vice versa. जदि देखुछ money circulation अधिक रहुछि त लेकिबो लोकंकर buying capability भी अधिक रहबो demand product रो demand अधिक रहबो आ जदि money circulation market रे कम रहुछि त देखियो सेई टाइम रे demand टा कम रहबो. Okay, then our next point है law of demand. Law of demand कौन? The law of demand explains the relationship between change in quantity demand and change in price. मतलब क्वांटिटी रे केते चेंज होला को प्राइस रे केमती चेंज होची या फिर प्राइस जेते बळे इंक्रीज करूची क्वांटिटी रे कोन चेंज होची सेटा को हमें कहचे लॉ ऑफ डिमांड. It states that higher the price, the lower would be the quantity demand in the market. Obviously हमें normal life रे भी हम देखते जदि कोनोसी जिंसर प्राइस टा बढ़ी जाउची त कोन हमर कोन करची तल तार डिमांड टा कम करची हमें से जिंस को किछि मोमेंट पे अवॉइड करची कि मतलब त प्राइस टा कमिले हमें से जिंस को परचेज करबा त डिमांड टा कमची जदि प्राइस बढ़िबो गोटे प्रोडक्ट रो त से प्रोडक्ट रो डिमांड टा कमिबो एंड द लोअर प्राइस जेतबेले प्राइस टा लो रहउची सेतबेले कोन होची हायर वुड बी द क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट कला कि जदि प्राइस टा लो रहउची से समय रे डिमांड टा हमर अधिक रहउची. Then in other words, the law of demand states that the price and the quantity demand are inversely related, all other things being equal. मतलब सब जिंस इक्वल रहबो बट प्राइस और क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करे कि हमर लॉ ऑफ डिमांड टा हमर डिपेंड करे प्राइस और क्वांटिटी ऊपर. Then assumption of law of demand. The first assumption रहइबो कि कोन ना income level should remain constant. The law of demand operates only when the income level of a buyer remain constant. मतलब income level constant रे थिबो law of demand जो कथा जो कहचे किछिटा assumption अछि तादर को केस रे होछ. तो फर्स्ट हला income level टा constant थिबो. If the income rises while the price of the commodity in question does not fall, it is quite likely that demand may be increased. And therefore, the stability in income is an essential condition for the operation of law of demand. So first key income level constant रहइबो. Then also taste of buyers should not change. Any changes that takes place in the taste of the consumers will in all probability prevent the working of the law of demand. It often happens that when taste or fashion change, people raise their preferences, then price of other goods should remain constant. The change in price of other goods often affect the demand of a particular commodity. If price of the commodity for which demand is inelastic to rise, the demand for the commodity or other than this improbability will decline even though there may not be any change in its price. Therefore, the law of demand to operate in it is very necessary that price of other goods do not change. Then no new substitute for the commodity. मतलब तुम्हें जो product करते तभी तार किसी substitute commodity नहीं जब तमें कहले coffee पे कि substitute है ला हमारा tea यदि किसी नहीं. Then if some new substitute for the commodity appears in the market, the जदि तुम्हें कौन सी product produce करूचो तार जदि किसी substitute अच्छी and जदि से substitute product टा तुम प्रोडक्ट प्राइस रो कम रे रहउची ऑब्वियसली लोक माने प्रेफर करबे कोन ना द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जोटा कि तुमटू कम प्राइस रहउची एंड तुम डिमांड टा कोन करबो डिक्लाइन करबो डिक्रीज करबो and this is quite natural because with the availability of new substitutes some buyers will attracted towards new product and the demand for the old product will fall even the price remain unchanged. Hence, the law of demand operates only when
the market for the commodity is not threatened by a new substitute. Then price raise in future should not be expected. If the buyer of a commodity expect that its price will rise in future, they rise its demand in response to an initial price rise. This behavior of the buyer violates the law of demand. Law of demand कहछि price rise करिवो future रे तुम सेटा केबे भी expect करिवो. Okay. So and therefore for the operation of the law of demand, it is necessary that there must not be any expectation for the raise in price in future. And जो एते सारा जो सब हमें assumption पढ़िले, this assumption of law of demand is explained in terms of demand schedule and demand curve. तमे एबे देखिबा कि demand schedule कोन फिर demand curve कोन. First as our demand schedule. Demand schedule is a table or chart which shows the relationship between price and demand of a commodity or service unit of time. मतलब demand schedule किछि न गोटे टेबल बा गोटे चार्ट भी कहि परियो जोटा कि हमको शो करा है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस एंड डिमांड बितर रिलेशनशिप टा शो करा है. If we list the difference quantities of commodity and demand at different price in form of a row and column, so row and column जदि हमें कहबा, and ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା कि डिमांड स्केड्यूल ही हम जान परियो जोटा कि हमें कहछ ना डिफरेंट रो एंड डिफरेंट कॉलम रे जदि गोटे रो रे हम कोन प्राइस रखिले और गोटे रे डिमांड रखिले तो पर्टिकुलर प्राइस रो गोटे प्रोडक्ट रो डिमांड केते रहउची तो सेटा को हमें कहछ हमर डिमांड स्केड्यूल. And demand schedule establishes a functional relationship between independent variable price and dependent variable demand. Then as a demand curve. It's a graphic representation of demand schedule. जो हमें चार्ट बनेइथिले टेबल बनेइथिले जो हमें कहछे कि डिमांड स्केड्यूल रे त डिमांड कर्व टा होची तार ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ताको ग्राफ रे केमते हमें रिप्रेजेंट करबा. That is the whole of the line showing price demand relationship is called demand curve. मतलब प्राइस और डिमांड रो रिलेशनशिप. प्राइस बढ़ले डिमांड कोन होची, प्राइस कमले डिमांड कोन होची, या वाइस वर्सा. आ जो डिमांड कर्व हमें पढ़ले सेटा टू टाइप्स. गोटे देखिबा हमें कोन ना इंडिविजुअल डिमांड कर्व आ गोटे देखिबा मार्केट डिमांड कर्व. Individual demand curve, like individual demand curve represent the graphical presentation of various quantities of a commodity demanded by a single consumer. Individual कोचे ना single consumer रो गोटे रो देखिबा हमें for period of time at various price of the commodity keeping all the factors affecting demand constraint. देखो जदि भी हमें देखछे इंडिविजुअल डिमांड कर्व रे मु कोन देखछि क्वांटिटी डिमांड रखछि एंड प्राइस. ओके क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस प्राइस वाई एक्सिस. ओके जदि गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस 200 रहउची तो से टाइम रे प्रोडक्ट केते डिमांड केते रहउची मात्र गोटे. जो से टाइम रे जदि प्राइस टा कमी कि 180 हेउची देखो डिमांड आछी दीटा क्वांटिटी डिमांड रहउची. यदि कोन कमी कि 150 आसुची प्राइस ऑब्वियसली जते बेले प्राइस टा कमे हम सेते बेले कोन इंडिविजुअल केस रे भी हो हमें कोन करंती ना अधिक परचेज करंती. जदि प्राइस टा रेज करे तो हमें कोन करंती कम परचेज करंती. सेमति कहला कि यदि 150 रहउची ताल कोन होची ना क्वांटिटी टा बढ़ुची तीनटा होची. यदि 120 होची देन क्वांटिटी बढ़ी के चारटा होची. देन यदि 100 प्राइस होची देन क्वांटिटी बढ़ी के पांचटा होची. हो ना नहीं तो एटा हला इंडिविजुअल डिमांड कर्व.
तो देख सब इंडिविजुअल डिमांड कर्व रे कर्वटा देख डाउनवर्ड रोची कारण प्राइस बढ़िले कौन होची क्वांटिटी कमुची तो एबे देख मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड कर्व देख कि एटा भी सेम market demand curve represent the diagrammatic presentation of various quantities of commodity and demand by all the existing consumers मतलब गोटे गोटे नहीं कि कले हमें इंडिविजुअल कहथले सब इंडिविजुअल मानन को टुगेदर कर दियो मार्केट कले कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम various price of the commodity keeping all the other factors affecting demand constant. It is a summation of all the consumers purchasing commodity or various price level. देखो the demand curve एठी भी देखो एटा भी डाउनवर्ड रोज कारण देखो जदि हमें कोन रोची ना गुटे सेम केस जदि प्राइस 80 रोची देन धर देखो क्वांटिटी तार 10 रोची जदि प्राइस 60 रोची डिमांड रोची हमरो 15 देन जदि प्राइस 40 रोची डिमांड 20 देन जदि प्राइस हमरो 20 रोची देन हमर डिमांड रोची 25 ओके तो दीटा जाक केस रे देखिले कि हमर डिमांड कर्वटा कोन रोची ना डाउनवर्ड सो करोची है ना नहीं तो व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड काहे कि सबले डाउनवर्ड ही रोची डिमांड कर्व हमरो ना फर्स्ट आस्तिला कि हमरो इनकम इफेक्ट now when the price of the commodity falls the consumer can buy the same quantity of commodity with lesser money or he can buy more of the same commodity with the same money देखो जदि गोटे commodity रो प्राइस या फिर गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस जते बेले कमुची कंज्यूमर कोन करची सेम क्वांटिटी रो मतलब परचेस करची जति की क्वांटिटी परचेस करूथिला से दी क्वांटिटी रो परचेस करची या फिर कोन हबो से सेति की क्वांटिटी रो परचेस करूची बट कोन रहउची ना तार प्राइस टा कमी जाउची कारण ऑब्वियसली गोटे मतलब गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस सेते कम रहिची सेम क्वांटिटी जदि से दीटा आगुरु भी दीटा किनुथिला एबे भी दीटा किनुची बट से दीटा रो प्राइस कोन होइची एबे कमी जाइची एंड नेक्स्ट केस होई पारे से कोन कर छाई पारे ना जेति की प्राइस दे की आगुरु किनुथिला सेति की प्राइस दबो बट एटी कोन हबो त क्वांटिटी टा बढ़ी जो हां ना as a result of fall in the price of the commodity consumers real income or purchasing power increase जदि गोटे हमें जानि छे obviously कि जदि गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस टा कमी जाउची तल कोन कंज्यूमर रो purchasing power टा increase होची this increase in the real income includes him to buy more of that commodity thus demand for that commodity whose price has fallen increase यदि प्राइस टा फॉल करूची ताले डिमांड कोन होची ना हमरा इंक्रीज करूची हमें जेमती ग्राफ रे हमर देखले कि जो दिरा कर्व देखले इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो कि हमरा मार्केट डिमांड कर्व हो देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि गोटे प्रोडक्ट जदि कहूचे तार सब्स्टिट्यूट कोन रहिची when the price of a commodity fall it becomes relatively cheaper than other commodities it includes consumers substitute the commodity whose price has fallen for other commodities uh, which have now become relatively expensive the result is that total demand for the commodity whose price has fallen increase then new consumer creating demand when the price of a commodity fall more consumers start buying it because some of those who would not afford to buy it previously may have afford to buy it this raise the number of consumers of a commodity at a lower price and hence the demand for the commodity in question then based on law of diminishing or marginal utility
The law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. According to this law, when a consumer buys more units of a commodity, the marginal unit of that commodity continues to decline. And therefore, the consumer will buy more units of that commodity only when its price falls. ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢୁଛି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର obviously ଚାହିଁବ କି କମ purchase କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କମୁଛି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଅଧିକ ହିଁ buy କରିବ. When fewer units are available, utility will be high and the consumer will be prepared to pay more for the commodity. ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ କି cyclone time ରେ ଯଦି ଆମେ ଥର କହୁଛେ କି ତା ପରରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିପାରୁନି ଆମ ପାଖକୁ, ତ obviously ଯୋଉ ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କଣ କରନ୍ତି ବଢିଯାଏ, ହଁ ନା ନାଇଁ? Then price effect. Every commodity has certain consumers, but when its price fall, new consumers start consuming it. As a result, demand increase. On the contrary, with the increase in the price of the product, many consumers will either reduce or stop its consumption and the demand will be reduced. Thus, due to the price effect, when consumers consume more or less of the commodity, the demand curve slopes down. Then, different income groups. ସମସ୍ତଙ୍କର income ତ ସମାନ ନାହିଁ ନା, different income groups ର ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି. ତ there are person in different income groups in every society, but the majority is in low income group. The downward sloping demand curve depends upon this group. Ordinarily, people buy more when price fall and less when price rise. The rich do not have any effect on the demand curve. ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ରିଚ୍ ପର୍ସନ ଯୋଉମାନେ କହୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ମତଲବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଡିମାଣ୍ଡରେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି କି ସେମାନେ କଣ they are capable of buying the same quantity at even at a higher price. ଯେତେ ବି price ବଢୁ ସେମାନେ ସେ price ରେ ସେମାନେ purchase କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର capable ଅଛନ୍ତି. but ଯୋଉମାନେ low income group ରେ ଅଛନ୍ତି obviously ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି demand ଟା decline करे. मतलब ଯଦି price ବଢିଲା ତ obviously ସେମାନେ purchase କରିବେନି, ତ decline କରିବ ଗୋଟେ product ର demand ଟା. Then different uses. So there are different uses of certain commodities and services that are responsible for the negative slope of the demand curve. With the increase in the price of such products, they will be used only for the more important uses and their demand will fall. On the contrary, with the fall in price, they will be put to various uses and the demand will rise.